man behind the wheel smiles, a crooked smile. The man on the chair smiles. The man outside waits. Waits till the tears dry up. Waits till the flames shoot up. Waits till another transgender immigrates. For them, that is indignation or that is fire. Death was too unrevealing in this person's life, where people entangle me in their whims. Their voices sound like sweet like melodies, but their deeds is as ghastly as deceit. Though I'm deprived by my own ones, there's still the sense of human remains. We have seen never join birth. Why did we die by birth? Well, good evening, ladies and gentlemen. I'm Rohit Park. I'm your host tonight, and I welcome you all to the most emotional journey of being celebrating ourselves. When I talk about ourselves, it's not about the man, woman, he, she. We are celebrating love. You know? Now let me start asking a question from all of you. What love according to you is? Ma'am, will you tell me what love according to you is? Is something which can you can explore love, and love according to me is not only an expression, but it is something which is the most divine thing in this world. You can give love. Yeah, but do you think love has got any gender? No. Okay. Now my second question to all of you is, if you mix the 7 colors of the rainbow together in the color palette, what's the color do you get? If you mix the 7 colors of the rainbow in the color palette, what color you will get? I think the color of love. I think, of course, every color is mixed with. If you blend one color, it becomes one color that is Safi. According, yes, it is Safi. You're very well read. Well, yes, the Safi. We are all talking about Safi today. Well, technically, I'm a very bold and unapologetic personality point of view. I have never done the hosting in my life. This is my first experience. But during this journey, I got a very beautiful message from a dear friend. And I went for this beautiful screening of this movie, which really moved me completely, not as me as a person, but my whole individuality, which left me speechless. I was so moved that I could not sleep for 2 days. Because each and everybody over here has gone through one kind of experience in life. Even I've gone through a lot in my life, coming from a technical background, from a very, very rich background where my father was German Railways. When I came out of the closet in 1996, my family gave up on me. I was thrown out of my family, but my head was very high. I wanted to achieve certain things in my life. And for me, whatever hurdles came, I crossed that. And today I'm standing tall and talking in front of you with my pride and my dignity. So for me, I could relate to Safed. People over here, there's so many people, we discriminate between people, he, she, bisexual, gay, lesbian. I think it doesn't matter whatever person's orientation is. What matters how one human connects to another human being. That's what I have learned from my life. That's what my Lord Krishna has always taught me. And then there's a beautiful life. People started bombarding my WhatsApp messages with this trailers and beautiful messages, from every corner where people were calling me and talking about this only movie which was Safed, which really, without even knowing, I started promoting them in the social media. And everybody wants to say, what Safed is all about? Safed is all about celebrating love, celebrating yourself, celebrating your individuality. Without wasting any time, I would like to talk about a documentary about this movie which I saw, which was very beautifully done by Mr. Samir Halim. Samir Halim. Mr. Samir Halim is here? Where is he? Samir. You have no idea what you have given into the society. Salim, when this project came to you to do the documentary, what did you feel? What is your orientation? Are you gay, bisexual, or you are trisexual?
You think you are straight? I am, but I am straight, but I'm not I am open to anything. You experiment a lot of things in your life. I won't back out. One back out, but you respect everybody on this earth. So tell me about something about this documentary, Sandeep, when you did. What was going on in your mind, like what did you feel during this journey? See, firstly, what happened was I was never aware of transgenders or some other community. I was a normal human. I just graduated from college. I started working in films, and suddenly one day we started filming something, and that was the experience. Like, I suddenly got to know a lot of transgenders, and secondly, they were very normal. They were normal than me. Like us. Yes, they were very open to me than I was open to them. So that opened my mind, that changed my mind, that oh shit, they need to speak out, and if they cannot, then I have to do something for them. So that is when I was friends with Salman, I was friends with the other transgenders on set, and they made me feel friendly, and that is why I tried to take their story ahead and make a documentary. As a person, did it move you as your individuality? Did it affected your soul, or you could get connected to them emotionally? What really moved me was the ignorance, because everyone was aware of it. You are aware, I am aware. Everybody in this world are aware of the situation, are aware of these people. But the second part is they are ignorant about it. And that is what moved me. That why are they ignoring? You are aware, but you are at the same time ignoring. What is the problem in accepting it? You want yourself to be accepted. You do something you want it to be accepted in. If they are just being themselves, and you're trying to teach them that you're wrong. You're trying to tell them. One day they can stand up and tell you that you are wrong. What will you then do then? They have the less majority. That is why you are not. You are able to pinpoint them. So yeah. That's up. I wish you all the best, and all the best. You keep on doing good work and give to the world the best you can. Best will always come back to you. Ladies and gentlemen, put your hands towards Sandeep Meera. आधा केवल आधा नदी याद थी, पानी याद था, लहरें याद थी, बस गया मैं आधा ही आधा। समाज वाले कहते हैं ये हिजड़ा है, ये छक्का है, ये गुड़ है, ये मीठा है। लोगों ने ऐसा मजबूर कर दिया करने के लिए, तो आज हो गए हम ऐसे। हमें भगवान बनाया तभी तो हम ऐसे बने हैं, तब तो अब तो है नहीं कुछ करने का। हमें घर से निकलने के बाद हमें घर भी नहीं मिलता, हमें कोई रास्ता भी नहीं मिलता कि हम कहाँ जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही मंजिल होती है जो किन्नर समुदाय में जाने का रास्ता होता है। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की भी नहीं, मैं इन दोनों के बीच की कड़ी हूँ। वो कड़ी है किसी से जुड़ी नहीं है, मैं वो कड़ी हूँ। आम लड़का ही बना देता या तो फिर लड़की बना देता, दो तरफा जिंदगी बना के फिर छोड़ा मैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुसाइड करने का बनता, तो मैं कहता जान देते। मैंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे रोक लिया। ये जीवन जीने से बहुत तंग आ गए, अब जीवन जीने का मन नहीं चलता है।
तो उस मालिक से मौत मांग के मौत भी नहीं देता है। हमारे साथ रात को अपनी रातें रंगीन बनाना पसंद करते हैं, लेकिन दिन के उजाले में साथ देना पसंद नहीं करते हैं। हम भी नहीं कभी चाहा था कि लोगों के बिस्तर पर सोना या बदलते रहना लोगों के साथ अपनी रातें। मैं भी एक के ही साथ अपनी जिंदगी पूरी बिताना चाहती थी, कोई एक के ही साथ में रहना चाहती थी। तो इस चीज की शिकायत है मुझे इस समाज से। अक्सर आप देख रहे क्या होगा, कोई फायदा तो है नहीं। भगवान जैसे हमें बनाए वैसे उसको बनाए, बस पर इतना है कि हम थोड़ा सा अलग दुनिया से लोग सोचते हैं हम आए हैं, वो जय दुनिया से, इसलिए हम भी वही पेट से निकले जो पेट से तुम लोग निकले हो। तो ये अकेलापन हमारी जिंदगी में मुझे लगता है कि शायद उम्र रहेगा, मरते दम तक रहेगा। हमारे पास ऐसे बंदे भी बहुत से आते हैं, मिलते हैं हमसे ऐसे भी बंदे जो 7 वचन 7 फेरे मांग में सिंदूर मंगलसूत्र डालकर वो मेरे पास आते हैं, अपनी पत्नी के साथ धोखा करते हैं, दगाबाजी करते हैं। तो जब वो उनके ना हुए तो फिर हमारे क्या होंगे? बहुत हो चुका। ये दोहरी जिंदगी तिहरी जिंदगी जीने से अब कोई फायदा नहीं है। हमने अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हम किन्नर हैं या हम गे हैं या हम लेस्बियन हैं, तो हमें अब बता देना चाहिए, क्योंकि ये डर डर के जीने से अच्छा है कि मर जाना भी बेहतर है। फिर ईश्वर अल्लाह कहीं दिखता है क्या? कहीं दिखता ही नहीं कि उससे बोल दो, उससे कंप्लेन कर दो। क्या हमें जीवन दे दिया है? इंसान का इंसानों से जाने कैसा भेद है, कल का पहना लाल जोड़ा आज जाने क्यों सफेद है। सुख बोलना दुख बोलना, अच्छा कर्म करा किसी जाता है, पूरे करने भोगना था भोगना। जाए कर दूसरे का लग जाए, इससे अपना तो कोई सुख है ही नहीं, मेरे बारे में पहले हमारा मन नहीं लगता था, कहाँ है क्या है, कैसा जिंदगी जाएगा, हमारा कहीं मन भी इधर उधर मिल गया, भगवान नहीं मन लगा। सफेद कहने को तो रंग है, पर फिर भी इतना बेरंग है कि जिसने भी ओढ़ा आज तक उतार नहीं पाया। पत्थरों को भगवान और ग्रंथों को गुरु माना, दुआएं सारी ली हमसे और हमें हिंसा देने वाला। That was a small, beautiful, heartfelt injection. Thank you, Sandeep, for bringing this up. You know, wherever you are, I can't see you. Thank you very much. Isn't it heart-touching? It moves us, yes. My heart is full. Now, before I call one man, I want to tell you about him. Couple of years back, I happened to see him in Sonu Nigam's house, and you know, I thought that he's been very judgmental. Yeah, sure. I thought that he's a little judgmental, and I had my own opinion because I very carry a very strong aura, and gradually
And emotionally, I kept on seeing him in the social gatherings everywhere. And I was not knowing that he's so emotional, so deep, so beautiful, and a gorgeous human being when I connected with him. Okay, I came to know about his journey from the dark alleys of Muzaffarnagar to the escalators of Mumbai. His journey has been a roller coaster. He was an ice cream seller and struggled his life to become he touched so many people's heart that I can say he's a rising son of India who is bringing up such an emotional and such a sensitive topic, you need no introduction. I know you have done a couple of movies he's produced like Sarabjit, this goes on, Ram Leela, Kappar and I don't want to talk about this because I was so moved when I saw the movie Safed when he invited me with so much of love and he gave me a call yesterday and he said, Rohit, I really want you to host this. The host is not my subject. I make people look good. But I could not say no to him because the sensitive subject he brought to the society, which has moved me and I'm standing, leaving all our work here over here to support him. So without wasting any time, I would like to call on over here next to me the most incredible and the most beautiful human being whom I met recently, Sandeep. Please come over here. Thank you for bringing this up. Thank you for being so beautiful the way you are. Thank you for bringing this subject. When you were doing Safed, how did this concept came in your mind, and why, you wanted to do a subject which was such a high risk subject in the society? I have told this past in my interviews that actually I do still consider myself a newcomer in the industry because my father is not somebody who belongs to the industry, or even my mother. So when I thought of making a film, I was very sure nobody will give me a high budgeted film. No big A-listers will work with me. So it's very important to realize who you are. And that's what this film, Safed, is all about, who they are. That's what we have to realize. So I thought of this film and I knew that the subject itself is a star of this film. So I needed a good actor who can portray these characters to the audience in a very easy way. So when I wrote this film, it was around 70 to 80 pages. And post that, I made it to 30 pages. And when I narrated this film to a lot of people, they all with all their love and as a friend rejected this film. And nobody wanted to fund this film. And apart from that, nobody wanted to act in this film. So I'm really grateful to people like Abhay and Meera and Chaya Kadam and Jamil Bhai and Barkha. They all supported me, and but obvious Sameer and a lot of other people, Rahul, I took your name, Talik, and Mansi, Taruni. Yeah, so they all came together, and let me tell you, everybody worked in this film without any money. That was very important. I especially want to, and I especially want to thank today people who have actually understood and they have come to cover this because this is the first press conference where I see very, very limited media. But trust me, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात कि जो लोग आए हैं, वो लोग इस चीज को इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद. Thank you so much, and I will always remember these faces who have come from the media, and will always be grateful to this 5 people who are here. And Shilpi, I'm grateful to you because you are you do a very, very sincere and great effort for each and everything you do. Thank you for making Safed and reach where it is. Thank you. Thank you very much. That was very beautifully said. But before I call this moment in front of you, I think, more than the cast of the movie, this plays a very important role. Look, a director can write, and you can have a producer, you can direct, you can write. But if the kirdar is not very, if they cannot do the kirdar properly, then the whole movie goes to the... So I think this woman, before I call on the stage, I see her eyes talks everything.
Her opening scene, when I was watching this documentary and, he sent me a link. The first shot of Kali Ma, and when she's wearing a white sari, the first shot of a movie, I think it was very heart touching. I could relate to her emotions. I think she's done a fab job. I think, the whole expressions and everything what she delivered, I think is beyond expectation. So without wasting any time, I recall Meera Chopra over here, the most gorgeous, very ambitious and a very, very beautifully talented actress. Tell me one thing, when this Sandeep offered you this movie, which was because a lot of people want commercial movies. They want to do a commercial movie which is a very high budgeted and the kind of background you come from. And obviously you must be having a restriction. When you were reading the script, what was going on and how could you relate? Did you do the research on this? Did you do your homework? You did your workshop? Then how were you so perfect and talented on this movie? मैं इस क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट बाद दूंगी. Right now I'm in a very different mood because we just did an interview 5 minutes back और सलमा ने ना एक बात बोली जो मैं अभी तक I'm not able to get over that कि हम लोग अधूरे हैं और जब कोई इंसान एक ऐसा वर्ड बोल देता है कि we are incomplete, I feel this is just so wrong because हम सबको भगवान ने पैदा किया है, हम सबको उन्होंने जिंदगी दी है और किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि they are incomplete and they are अधूरा. We all are complete in our own sense. So nobody should even think that कि वो लोग अधूरे पैदा हुए हैं. But I can understand when Salma and when everybody of them they think that they are incomplete because हम लोगों ने उनको ऐसा feel कराया है. मैं off topic चली जाऊँ 2 मिनट के लिए. हाँ. 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिससे हमारी पूरी सफेद की टीम बहुत अफेक्ट हुई थी. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जज ने एक सेम सेक्स की पेटिशन को उठा के फेंक दिया था और बोला था कि मैं ये इमोरल चीज़ें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया. और हम सब ने उसके बारे में ट्वीट किया था और जब मैंने ट्वीट किया था तो मेरे को ना कुछ कमेंट्स आए थे एंड दोज कमेंट्स हैड वर्ड्स लाइक faggots, मीठा, गुड़, छक्का और ये लोग नॉर्मल नहीं है. So we have become so insensitive and so बदतमीज to give words like these to certain section of society. आप लोगों ने क्या हमें कोई words दिए हैं ऐसे? No. आप लोगों ने हमें no. इन लोगों के अंदर कितना गुस्सा होना चाहिए क्योंकि हम उनको usually इन शब्दों से बुलाते हैं. But they have not given us any such words. So यहीं पे clear हो जाता है कि these people are such beautiful soul. और फिर हम बात करते हैं normal की कि ये लोग normal नहीं है. Normal कौन है? हम लोग normal हैं. मैं कितने normal लोगों को देखती हूँ जो 2-3 शादियाँ कर लेते हैं और तब भी कुछ नहीं रहते. मैं कितने normal लोगों को देखती हूँ जो अपने माँ बाप को छोड़ के उनका मुँह नहीं देखते. मैं कितने normal लोगों को देखती हूँ जो सारी रात ड्रग पार्टी करते हैं और सारा दिन सोते हैं. वो लोग नॉर्मल है. सो मेरे को इस टाइम थोड़ा गुस्सा आया हुआ है कि हाउ हैव वी लेट दिस हैपन दैट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज लिविंग लाइक दैट. और सफेद इज जस्ट एन एफर्ट टू मेक देम फील वांटेड, टू मेक देम फील इक्वल एंड टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड लव दैट दे आर आल्सो लाइक अस, दे आर अस. So ये जो indifference और inequality है ना ये seriously खत्म होनी चाहिए. संदीप ने एक effort लिया है, नहीं लेते लोग. जैसे उन्होंने बोला लोग support ही नहीं करते ऐसी चीज़ों को. But I think high time हमें करना चाहिए. 21st century everybody should live equally. Everybody. आपका क्या question था sorry? I'll come to that later on, but I'm adding to this, I want to represent all of you here. Ma'am, I would like to tell you something. Our strength has never come lifting the weight in the gym. Our strength has come within our own self whenever our life has knocked us down. Okay? And for me, life is not qualified by fluent English or a rich lifestyle or a branded clothes. Life is measured by
the numbers of people smile after hearing our name. So I believe in that क्योंकि जब कुछ होता है, कुछ शुगर होता है, तो हम ही लोगों को बुलाते हैं दुआओं देने के लिए, हम ही लोगों से दुआएं देते हैं. तो I think so. हम different नहीं हैं, आप सब different हैं, isn't it, Mama? We all are very beautiful. मैं इन सब का दिल निकालूं, आप सब का दिल निकालूं और एक पैलेट में रखूं और मैं बताऊं किसका दिल कौन सा है. तो I think इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा. So I think it was very emotional. But now I'm going to call someone else who is a very cute. I think जब वो उनके मम्मी के पेट के अंदर होंगे तो उन्होंने मम्मा ने क्या खाया होगा. I don't know क्या खाया था आपने जब आपके पेट में आपका बेटा था. Okay, he's a very cutest guy, very sweet. जो मैं सोच भी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि वो इतना strong character इतनी ब्यूटीफुली अदा कर सकता है. Because it was not an easy job to play someone whom you are not. Okay? बहुत भारी भरकम ऐड किए हैं जब ये इंडस्ट्री में इन्होंने तहलका मचा दिया. इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं अमित खन्ना, जब इनकी पिक्चर उन्होंने खींची थी तो बाबा पूरे गे वर्ल्ड स्ट्रेट नहीं पूरे गे वर्ल्ड में सेंसेशन हो गया था कि ये लड़का है कौन. यू नो, कर्ली हेयर, very high fashion guy, priest of the goddess. He came from, I don't know from which angle, from which species of the earth he came over here. And obviously सारी queens ने लाइन मारा ही होगा इंडस्ट्री में. सब हम ही लोग तो डील करते हैं. हमारा तो बस सिंपल ना, पटे तो भैया, नहीं पटे तो सही है. Whatever. So मैं बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. मैं बोलना चाहूँगा one of the most sweetest human being. उनकी मम्मी ने उनको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी. मेरे को आज भी याद है, मेरे को शुरू भैया का मिले थे, उन्होंने मेरे पैर छुए थे और उन्होंने बोला था मेरे से कि यू आर वेरी गॉर्जियस, वेरी प्रिटी. तब से मेरा वो बेटे की तरह हो गया. तो वो तो दिमाग से निकल ही गया वो सिस्टम. But I would like to call him the very talented, who has got a bright future. In fact, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि I think you both should get a national award for this. I think Abhay, come over here. And this is not you, this is your DNA inside your mother that you're so beautiful, so humble. What other thing है तुम्हारी? First of all, thank you so much, everyone, for coming here. And sir, आपको शायद बोल रहे हैं नीचे. कोई बात नहीं, ये ऊपर आने की फिल्म है, नीचे जाने की नहीं. किसी के लिए अगर नीचे गए तो ये ऊपर आएगा. But anyways, thank you so much. आप लोगों को देख के इतनी खुशी मिल रही है कि ये सफेद जो है जो हमारा था वो लोगों तक पहुंच रहा है. And thank you so much, Amit sir, for first of all inspiring us with your story. And I think जो लोग मेरे left में बैठे हैं, I'm sorry to the right ones, but जो left में बैठे हैं, I think they are the most courageous people I've ever seen. और रोज निकलना अपना सर उठा के और दुनिया से लड़ते हुए, I think वो काबिल तारीफ बात है. तो एक बार खुद के लिए आप जरूर सुबह उठ के तालियां बजाएं कि हाँ, you are bringing the change और आप एक change का हिस्सा हैं. और साथ ही साथ अब मैं भी हूँ. और this brings me to a very common question जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई क्यों सफेद, मतलब सफेद क्यों, पहला काम और पहली फिल्म. तो ये फिल्म तो हमने देख ही ली है जो ZEE5 पे आ गई है. एंड जो वंडरफुली टैलेंटेड समीर अली, माय ब्रदर, जो आपने डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है, वो मेरे क्यों के सारे जवाब दे देता है. बिकॉज अगर आज के टाइम में अगर कोई ये इंसान सोच रहा है दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड दे चूज टू डाई ओवर लिविंग, आई थिंक वी हैव फेल्ड मोर देन एनीवन. एंड एज सर वी वर डिस्कसिंग, सर आल्सो सेड यस्टरडे, आई थिंक वी आर द वंस हु हैव मर्डर्ड देम एंड वी शुड बी पनिश्ड, नॉट देम. So that's the mindset and that's the thinking and that's what I live by, to treat everyone equally, which brings me to Salma. आप कोई भी नहीं करता होगा, because अगर आप ना होते, आपने मेरे साथ वक्त ना बिताया होता. देखिए, जब हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो पहली मुलाकात में खुशी की बातें तो सभी बोल देते हैं, लेकिन किसी के साथ, और स्पेशली सलमा जिनकी एक बहुत ही स्टोरी है, बैक स्टोरी है जो कि बहुत ही सॉरी बट सैडनिंग है.
जिसको मैं खुशी में ऑफ कोर्स बदलना चाहूंगा, जो मैंने सफेद के थ्रू कोशिश भी की। बट पहली बार मिलने पे खुशी की बात तो सभी करते थे, लेकिन अपने दुख की बात कोई नहीं शेयर करता है। और वो उन्होंने अपना दिल मेरे लिए खोला, और ऐसा खोला कि मैं खुद ही घुस गया दिल में, और अच्छे से उसको निभा पाया। तो थैंक यू सो मच सलमा। एंड मेरे जो दो अनमोल रतन मेरे राइट पे खड़े हैं, आई थिंक आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। सफेद वाज नथिंग विदाउट यू ऑल। अगर आप काली नहीं होते, सर आप ना होते, नथिंग, कुछ भी ना होता। एंड बस यही बोलना चाहूंगा एंड में कि ये जो भेदभाव की रीत है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है। अब थोड़ा नई रीतों को आगे बढ़ाते हैं और ये पुरानी वाली रीत छोड़ देते हैं, ताकि आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो निभाते हैं अच्छे से। एंड लेट्स लीव द डिफरेंशिएशन ऑफ पीपल on the basis of how they dress. Let's leave it. Thank you. Thank you so much, Abhay, for beautiful. But I also want to thank each and every sport दादा, आपका जो भी मेकअप मैन होगा, डिजाइनर्स होंगे, एक पर्सन जिन्होंने आप ये किरदार निभाया, हम लोग की हेल्प करी सफेद के लिए, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट दिया है हमारे इंडस्ट्री को, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और इससे पहले कि मैं एक और शख्स को बुलाऊं, इनके बारे में एक शायरी में बोलना चाहूंगा कि इनका कहना है कि मुझसे नफरत करना है तो इरादों को मजबूत रखो, मुझसे नफरत करना है तो इरादों को मजबूत रखो, जरा सी चूक हो गई तो मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इनके बारे में, इनकी जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कुछ बातें इन्होंने कही जो मेरे को समझ में आई, कुछ बातें इन्होंने कही जो मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, you know, I've come from very literature background, and मैंने जिंदगी हमेशा अपने शर्तों के हिसाब से जी है। मैंने I've lived my life with my terms, with my condition. सुसाइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबके दिमाग में आता है, you know, हम इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि हमारे जो लोग ऐसा, I'm a bipolar, okay, I'm a bipolar, and लोग सोचते हैं what is bipolarity all about? इस लोग से कहते हैं कि but people don't know, it's a mood disorder, it doesn't mean। तो हर इंसान को उनकी खुशी पता है कि उनकी खुशी क्या है, उनका गम क्या है। अगर आप अपनी खुशियों को डिस्कवर करने के आपको किसमें सुकून मिलता है, तो आई थिंक सुसाइड नाम का वर्ड आपके दिमाग पर, आपके जहन में नहीं आएगा। तो मैं सलमा को बुलाना चाहूंगा। सलमा, I would like you to come over here. You are bold, you are beautiful, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तो थोड़ा आपकी जर्नी हमने देखी वहाँ पे, जो आपने बोला अपने बारे में, मे बी मेरे को पता है जिस शहर से आप आती है, क्योंकि मैं भी पैदा मैं इलाहाबाद में हुआ हूँ, brought up in Missouri, I'm from a very literature, like I said, from background. I understand जिस फैमिली को आप लगा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमको, और क्या महसूस किया आपने जब आपने सफेद देखी, संदीप सर ने इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बताया, आपने इस जर्नी को बताया, आपका अभी के साथ कैसा रहा, कैसे, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ थ्रू सम स्ट्रेंजर, बट आपने बहुत बोल्डली से बात किया, वी लाइक टू नो फ्रॉम यू। पहले तो मैं सभी मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे प्लीज कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी व्यक्ति का मैं तहे दिल से नमस्कार करते हुए कम्युनिटी का और संचालक महोदय का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, सफेद मूवी जब से मैं बनारस से जब तक चली, तब से मैं मेरे चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं है। हम लोग 3-4 एक ग्रुप में सारे लोग मांगते एक घाट किनारे पहुंचे, थोड़ा सा सुकून लेने के लिए, कुछ जीवन उपार्जन के लिए हम लोग घाट में मांगने जाते हैं। उसी पीरियड में मुझे कि संदीप जी बैठे थे, संदीप जी बैठे थे और मैंने कहा दो ना, बाबू जी काशी में आए हो, बाबा की डिग्री में आए हो, दो ना। तो मुझे उन्होंने कुछ सेकंड तक उनको मैंने देखा, वो हमको देख रहे हैं, तो उन्होंने बैठाया, मुझसे बातें की, मेरी सोच, अपनी सोच को मिलाया कि हम अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा मूवी बनाई क्या? ठीक है,
फिर 1 साल बाद मैं अभय से मिली, अभय से गोली मिली, अभय से बात किया। उस पीरियड के दौरान 1 साल बाद समीर जी मिले मुझे। समीर जी ने कहा कि हम आपके पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं, क्या आपकी परमिशन है? हमने कहा बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकते हैं। जिस फैमिली का साथ नहीं मिला, जो माँ बाप हमारे साथ नहीं रह पाए, जो हमारा समाज हमारे साथ नहीं है, वो व्यक्ति मोबाइल हाथ में लेके, कैमरा हाथ में लेके हमारी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत गर्व की बात है। अरे अभी मेरे सर की छत नहीं है, मेरे पाँव में ठीक से चप्पल नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरा फादर हो गया, मेरा फादर नहीं है। इन्होंने जाने की कोशिश की और सबसे ज्यादा मुझे यकीन नहीं था कि डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे तो अभय कर पाएगा, नामुमकिन था। क्या मैं कुछ भी कर पाएगा? ट्रांसजेंडर की रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो प्रेरणा, वो समाज कहाँ है? इनसे प्रेरणा लीजिए, संदीप सर से प्रेरणा लीजिए, वो ऐसे व्यक्ति है। अरे हमें कोई नहीं पूछने आता है, हमको संदीप सर पूछने आए, मूवी बनाने आए। कभी दोस्त फैमिली के साथ कभी नहीं बैठे, कभी हंसा बोला नहीं, मगर इनके साथ जैसे एक फैमिली जैसा महसूस हो, एक दोस्त जैसा हम फील कर पाए कि प्रेम ये लोग दे रहे हैं, कि मोहब्बत से बात कर रहे हैं हमसे। उन्होंने देखा होगा, मैंने घर देखा होगा, इन्होंने मेरी फैमिली देखी, मेरी फैमिली भी देखी। मैं अकेली, मगर संदीप सर ने ये फील नहीं होने दिया बिल्कुल कि तुम अकेले हो। उन्होंने कहा कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपके साथ हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री का, मैं सफेद का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। कैसा बंदा मुझे कभी मैंने जीवन में नहीं देखा। अरे हमसे दुआएं मांगने आते, हम आपसे पूछते थोड़ी हो कि कैसे खाते हो, कैसे जीते हो, कैसे रहते हो। हमसे कभी नहीं पूछा आपको खाना मिला कि नहीं मिला। घर के बाहर मांगने के तरह चलना, आगे चलना, जाना, क्या मांगने आ जाते हो? हम आपसे बाबूजी क्या मांग लेते हैं? जिंदगी की एक भूख है कि हमें खाना मिल पाएगा, हमें कपड़ा मिल पाएगा, हम समाज में जी पाएंगे, भारत से जुड़ पाएंगे, इक्वलिटी हमें आएगी, हम कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, जैसे आपको आजादी है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, मैं क्यों नहीं पहन सकती? मैं क्यों नहीं फैमिली में रह सकती एक लड़की के कपड़े पहन के? मैं क्यों नहीं जी सकती? बहुत कष्टदायक है। मैं सभी देशवासियों को कहता हूँ बहुत कष्टदायक है। संदीप सर बहुत हमारे लिए बहुत संदीप सर का मैं कभी मैं उनका एहसान, उनकी चीजें मैं ये लोग नहीं भूल पाएंगे। It's an emotional one for her. I give you 5 minutes. So beautiful. So beautiful. संदीप सर, अभय और हमारे मीरा, समीर, इन लोगों ने जो किया है ना हमारे लिए बहुत किया है, बहुत प्रेरणादायक है। बहुत मैं सारे देशवासियों से कहती हूँ ये सफेद से और संदीप सर से और मीरा, अभय और समीर से सीखिए आप लोग। ये है मूवी, ये है फिल्म, ये है इंडस्ट्री, सच्चाई है। हम अधूरे हैं, हमें पूरा कर दीजिए। हम आपसे पूरा अपने करने के लिए आपसे प्रेरणा मैं आपसे लेना चाहती हूँ। बहुत दुखी हूँ, मैं अधूरी हूँ, बहुत अधूरी हूँ। नहीं मिला कहीं छत, नहीं मिली कहीं जगह, एक सफेद की है कि जो हमको एक जगह दे सकती है, छत दे सकती है। और इसे इक्वालिटी आएगी, सभी देशवासियों से कहते हैं इसको फॉलो करें, इसको देखें, एक बार देखें, से प्रेरणा लें कि कैसे जीते, हम कैसे रहते, कैसे चक्का हिजड़ा कहा जाता है। ये जीवन से अच्छा ना, मर जाना ही अच्छा नहीं जीवन।
अब नहीं मिला ना तो कभी नहीं मिला। Thank you very much for this overwhelming, very emotional speech, darling. May Lord Krishna bless you. You are a very strong person. According to me, ये छक्का, ये जुड़ा, ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पर टेक्निकली मैंने इसको तो अपने ज्वेल्स बनाया है, जब तो सड़क पे बस मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर सोशल मीडिया में जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कोई गंदा कमेंट कर रहा है, a lot of people say you should delete the dirty comments and all, मैं कमेंट को डिलीट नहीं करता, because मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी ने एक मैसेज टाइप किया है गंदा, तो उसने अपने आप को अपने जीवन के 60 सेकेंड्स दिए, तो आप उसकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, तो हर नेगेटिव चीज को अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो, life is very beautiful, darling. You don't need to shed these tears. You are beautiful. God has made you perfect. हम जानते हैं यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबकी एक एक कहानी है, मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, हम सबकी कहानी है, ओके? और स्ट्रेंथ हम जो जैसे हम LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी हम अपनी खुद ताकत है, ओके? So for me, respect is not demanded; it's commanded. So उसमें मैं कहना चाहूँगा that you are very beautiful, you are very inspirational. Maybe you were raised into a city where acceptance was a little slow, but we are getting there. आप भी मेरे को 377 की बात कर रही थी ना, life section, कि भी ये advice, so I think it's beautiful. For you were born naked, you will die naked. He was talking about his ex-boyfriend. We all have got our affairs and all, but I think you have to एक इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, कोई इंस्पिरेशन और एक सीख देके जाता है, ऐसे लोग कहते हैं उसने मेरे को यूज कर लिया, फॉर मी कोई किसी को यूज नहीं कर सकता, हम अलाउ करते हैं लोग हमें यूज करें, ये मेरा मानना है. सो सलमा, आई नो दैट यू नॉट शेड योर टीयर्स मोर नाउ. मैं जब सफेद को देखती हूँ ना, तब तक रोती हूँ. मुझे वो जिंदगी की याद, विदेश बोली कुछ याद आती है. ऐसे दिन गुजरे थे, ऐसे ही रात गुजरी, ऐसे दिन गुजरे. सर पे नहीं, मैंने सर पल्लू किया, जगह अगर से कफन लग जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा. मगर सफेद ने बहुत बड़ी प्रेरणा समाज को दी है. सफेद से ये प्रेरणा हासिल करें आप सबको सही निवेदन. संदीप सर का बहुत बहुत मैं दिल से अपने समुदाय की तरफ से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है. हर ट्रांसजेंडर के लाइफ में जो लव का मतलब होता है LOVE, हर ट्रांसजेंडर के मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हर ट्रांसजेंडर के लाइफ में जो लव का मतलब होता है, L stand for land of sorrows, O stand for ocean of tears, V stand for valley of death, E stand for end of life. For us love is all about that. So in that note, मैं थोड़ा माहौल को हल्का करना चाहूँगा यहाँ पे, और मैं इस को प्रोड्यूसर जो हैं हमारे मिस्टर जफर मेहंदी जी, आप यहाँ पे हैं, जफर जी हैं, जफर जी ने बहुत काम किया है गणपत, अलीगढ़, इतनी सारी सरबजीत, सारी मूवी को संजीत जी के साथ वो प्रोड्यूस किया है, बड़े सीन के. I think one of toilet. Also now I would like to call the main part of the movie, just हमारे दिलों को छुआ है. I think the editing is something which is very important of anything what we do. I would like to call Rahul Raniwal over here. Rahul, where are you? And along with that, the associate director Mansi. Where is Mansi? Rahul ji, please say something. क्या बोलूं, बस के बाद संदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा. काम करने का Mansi, would like to say something? I just thought you were being a strength of the Safed. What was your big journey? How did you feel after seeing the movie? I don't know. I mean, Safed has been the only learning institution for me ever, and Sir has been the only teacher in my life where I would take something from or do something. It will always have his part. So yeah, Safed is. I think I was destined to do it. It was my destiny to be a part of it. I'm so grateful. I can't even tell you.
It's been a journey, and I'm so happy the film is out finally because not just me, the team has done tirelessly work, and it's been 2 years of roller coaster ride, and I'm really, really happy to be a small part of it. Thank you, Mansi. I think now Meera has really gathered all her strength and energies and persona with beauty. I think she's ready to, face my strong questions. So Meera, faith has been a very, very difficult subject and playing a role, what you played over there was not, I'm sure it was not a very cakewalk for you, but you have to tell me your experience, your mood, how did you transform yourself into a widow, and though it was a lot of script must be coming to you and you must be refusing a lot of script, why faith? Rohit, first of all, thank you for supporting our film so much on social media. You've been a constant support for us. सफेद मुझे लगता है कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको देख के मजा आए, जिसको करके मजा आए. I always feel like that. And I feel that cinema is such a powerful medium to say something, to give something, so that people get influenced. When Salman Khan does Devina, the whole world does that hairstyle, and they start promoting that. When Shah Rukh Khan wears a jacket, the whole world goes and buys the same kind of jacket. So cinema is that medium. So India has so many untold true stories that needs to be told, and people like Sandeep are very few. So when that script came to me, I was taken aback, I was shocked, I was silent because I could not believe what I just read. And for me, there was not even an iota of doubt in my mind that I don't want to do it, because I knew the message the film was saying. So I wanted to do it, but the only concern was, will I be able to do justice to this role? Because it was something that I had not come across, and I had not seen a widow like that. But Sandeep ka conviction was strong. He had a very strong conviction. He just told me that you agree and Kali is my responsibility. I agreed and Kali was Sandeep's responsibility. It took me days when I started shooting to get into the soul of Kali, because she has a very complicated soul. When you go at a very young age, when you go through something so painful, I didn't know how to show that on screen. Because pain dikhana bahut mushkil hai. So that was the only difficulty I had with Kali. And Sandeep helped me. I just had his hand and I just saved him. People seem to detest them, hate them, and despise them. They're away from the miseries, they're away from the gains. They have seen many sorrows on this earth, but they have never experienced joy and mirth. What they always say, why didn't they die at their birth? But at the end, कैसे भी 10 में निकाली 1990 में, और मुझे उस मिनट के पहले जब मैं प्राइमरी स्कूल और फिर बोलते हिंदी में बोलते प्राथमिक माध्यमिक और फिर उच्च शाला ऐसे बोलते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक का मेरी जो जर्नी मैंने क्या पढ़ी मुझे पता ही नहीं था. लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स थे और जो अच्छे लोग थे वो हमारे साथ में बहुत ही बिहेव करते थे उस टाइम में, कि ये कैसी बात करता है या ये लड़की जैसे रहता है ऐसा वैसा. तो उस टाइम पे जो किशोरी अवस्था रहती है तो उस टाइम पे हमको समझा ही नहीं कि हमको इसे क्यों बोल रहे हैं. तो फिर उसके बाद में 8वीं का जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई प्राथमिक माध्यम से माध्यमिक मीडियम में आई, तो वहाँ पे भी मतलब सारे अलग अलग लोग सब आए स्कूल में. तो वहाँ पे भी मेरी जर्नी ऐसी हो गई कि मतलब मेरी पढ़ के टीचर बनने वाली थी, मुझे टीचर बनना है, अब मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो सबका होप ये था कि मैं टीचर बनूंगी. तो लेकिन बोलते हैं ना कि 10वीं कैसा लोगों के छोटे बर्तन 10वीं, ये जो मैंने ये भेज बदला, ये जो भेज है मेरा, ये मेरी बम्बई में पैदा से मेरी बम्बई में पढ़ाई मेरी बम्बई में, और मैं हिंदू समाज से भी बम्बई में हूँ. कहीं अलग देश से मैं बॉम्बे का ही बाल बच्चा बम्बई में पढ़ के मैं आज
ये स्तर पे मैं जो भी हूँ, तो मैं अपने किन्नर घराने से हूँ और 1990 जब मैं 10th करी उसके बाद में मेरा सफर चालू हो गया। 12वीं में नहीं करी, लेकिन 12वीं में मैं जब किन्नर में मैं जब 10वीं में थी 1990 में, तब मैं किन्नर के साथ में जुड़ने के बाद में मुझे पता चला कि ये समाज हमारा नहीं है, हमें कहीं जाना है दूसरी जगह। और फिर 12th करी कॉलेज में तो वहाँ पे भी मुझे लड़के के वैसे पंपिंग करते थे, कुछ करते थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर मैं टीचर की बनूँ तो मेरा लाइफ जीरो में रहेगा, मुझे नहीं बना, क्योंकि उस टाइम कोई मार्गदर्शन देने वाला ही कोई नहीं। तो फिर मैं 1990 में मेरी नींद पड़ी और तब से मैं वो किन्नर समाज में ही हूँ और मैं मेरी लाइफ के अंदर बहुत खुश हूँ। मुझे लोगों ने पढ़ाया जो भी कुछ किया, लेकिन मैं आज सक्षम हूँ अपनी जगह पे। मैं सोशल वर्क में काम करती हूँ किन्नर में, एक सामाजिक संस्था बन के एक हमारी घाटकोपर में संस्था है, वहाँ पे सलमा मैम हमारी मैम है। तो सलमा मैडम जो हमारी गुरु भी है, हमारी मोटिवेशन भी है, हमको मतलब जो भी कुछ होती है। आज लॉकडाउन में इतना हम लोग सब किन्नर लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको घर के किराए थे, लोगों ने उनके घर से भी निकाल दिया। ये सब हमने झेला है कोविड पीरियड में, हमें को तकलीफ हुआ। तो जो भी हमको राशन प्रोवाइड हुआ, जो भी एक्सपाइजर जो भी हमको किन्नर माने दिया, उसके सपोर्ट से हम लोग कुछ नहीं है। और थैंक यू नीलोफर क्योंकि आपने अपने यहाँ बुलाया। ये जो किन्नर की जो सफेद है, ये सफेद ऐसा होता है कि कोई भी कलर ले लो, उसके ऊपर कुछ गिर भी गया तो वो दिखा नहीं जाता है, लेकिन सफेद पे अगर कोई चीज गिर गई तो वो दाग लग जाता है। थैंक यू सो मच, आप सब हमारे एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमको अपना थोड़ा जर्नी बताया। थैंक यू सर, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी एंड स्पीकिंग योर हार्ट आउट, यू नो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपके लिए सफेद, ये भावना हमारे दिल की, ये भावना इन सब की। मैं आप सबको तहे दिल से मीडिया वर्कर्स थैंक यू बोलता हूँ। यस श्योर, यू वांट टू टॉक? Yeah, so I would like to first thanks all of you, संदीप जी जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है हमें, और स्पेशली थैंक्स टू सलमा। शी इज माय फ्रेंड एंड आई एम वेरी प्राउड दैट शी वाज इन अ बैक स्टेज टू teach Chandi's role to Abhay. So I would like to just thankful all of you, all the team. So I especially, my name is Nilofar and I have been working with the Home Supporters, which is a very big organization in this India, and this has been working for around 30 years. So I especially has been working for special transgender person for Pan India. So I have been conducting a lot of activities, just like conducting sexuality and gender sensitization event with corporate sectors as well as government officials, schools, colleges. But actually people have a lot of misunderstanding, misconceptions over there. So we need to awareness people, sensitization as well as this type of the documentary. And in 5 days that we will get that much success when people will get aware about the transgender person, Meera culture and all these things. So thank you all of you. Thank you so much, thank you so much. At the end I would like to conclude, I would like to thank Sandeep ji for having us over here, and at the end I would like to conclude to give to the world the best you have. And always remember, the best will always come back to you. Till then I'm signing off to you, Rohit. Thank you.